Good morning, student. On yesterday, I was explained about the how to solve the quadratic equation with the help of middle term split method. With example, today we will learn how to apply the middle term split method in exercise to solve the questions. I hope कुछ लोगों ने किया भी होगा, बट इसको हम दोबारा करते हैं. तो in question number 1 there are 5 parts, and first part is given that x square minus 3x minus 10 equal to 0. So what to do? 1 into minus 10, this is equal to minus 10, and you have to split minus 3. So factorize minus 5 into 2, this is equal to minus 10. So you can write in place of minus 3 minus 5 plus 2. This will be equal to x square minus 5x plus 2x minus 10 equal to 0. So you factorize this term x minus 5 and x plus 2. So this equation will be equivalent to x minus 5 x plus 2, and we know that p into q equal to 0. This implies p equal to 0 or q equal to 0. So you can write x minus 5 equal to 0 or x plus 2 equal to 0. This gives you x equal to 5 or x equal to minus 2, and these value of x is called roots of this equation. Now the second part, 2x square plus x minus 6. Factorize it. Firstly you have to do 6 into 2, this is equal to minus 12. 6 into 2, a into c. So minus 12 you have to factorize such that its difference or sum is x. So this will be equal to 4 into minus 3, this is equal to minus 12, and 4 minus 3, this is equal to 1. So in place of x you can write 4x minus 3x. After then you have to take the common, and you get the factorization x plus 2, 2x minus 3. So 2x square plus x minus 6 equal to, you can write as, after factorization you can write 2x square plus x minus 6 equal to 0. This implies x plus 2 and x plus 2 and 2x plus 1 equal to 0. Sorry. X plus 2 2x square plus x minus 6, this is equal to x plus 2, 2x minus 3, this is equal to 0. This implies x plus 2 equal to 0 or 2x minus 3 equal to 0. Separately you can write x plus 2 equal to 0, this implies x equal to minus 2, and 2x minus 3 equal to 0, this implies x equal to 3 by 2. The next part is given root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0. So you have to factorize. After factorization you get root 2x plus 5 and x plus root 2. So this equation will be equal to root 2x plus 5 x plus root 2 equal to 0. अब दोनों आप प्रोडक्ट को अलग अलग जीरो कर दीजिए, आपकी वैल्यू एक्स की आ जाएगी. यहाँ पे देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट है. 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 8 1/8. तो जस्ट यू हैव टू व्हाट टू डू, यू हैव टू टेक द कॉमन 1/8, and after then you see that this is equal to 1/8 4x minus 1 of whole square. So put it equal to 0, you get the x equal to 1/4,
Here both the roots are same because you get the complete square 4x minus 1 of whole square. So you can write 4x minus 1 into 4x minus 1 दिस इज इक्वल टू जीरो. सो आप अल्टरनेट आप दोनों को जब अलग अलग जीरो करोगे तो यहाँ पे दो रूट्स आएगा. और ये हर ध्यान रखना है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन दो होंगे, क्योंकि आपको बताया था जब मैंने आप नाइन्थ में जब पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो आपको वहाँ बताया गया होगा कि जितनी डिग्री होती है उसके उतने जीरोज होते हैं. इसी तरह से किसी भी सॉल्यूशन का, किसी भी इक्वेशन के सॉल्यूशन का जितना पावर लगा होता है उतना उसकी वैल्यू आती है. आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each, and product of the numbers of marble they have is 124. Find out how many marbles they had to start with. The first part we suppose the number of John's marble is x. Then the remaining marbles is how much? 45 minus x. And after then they lost their marbles 5 each one. Then the new number of marbles is x minus 5 and 40 minus x. According to question, product is equal to 124, so we can write x minus 5, 40 minus x equal to 124. After simplify it, you get the quadratic equation x square minus 45x plus 324, this is equal to 0. And do the middle term split method. You get the factorization x minus 36 and x minus 9, this is equal to 0. It means you get the two values 36 and 9. तो अगर जॉन के पास 36 मार्बल हैं तो जीवंती के पास कितने होंगे? 45 माइनस 36. तो ये तो अल्टरनेट हो सकता है ना. जॉन के पास अगर 36 है तो जीवंती के पास 9 होंगे. अगर जॉन के पास 9 होगा तो जीवंती के पास 36 होगा. तो आपको समझ लेना है. सेकेंड पार्ट करें कि एक cottage industry produces a certain number of toys in a day. The cost of production of each toy was found to be 55 minutes. The number of toys produced in a day, how a particular day total cost production was 750. Find out the number of toys produces on that day. So just you have to suppose it, the number of toys produces Vx, then the cost of production is what for each toy? 45 minus x. Or it is given that total production is 750. So after multiply x into 55 minus x, this is equal to 750. After you simplify it, you get the quadratic equation and solve it by middle term split method. You get the solution. The next question is find the two numbers whose sum is 27 and product is 182. देखो तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आप एक दो नंबर का सम 27 दे रखा है तो अगर आप एक को एक सपोज करते हो तो दूसरा वाला अपने आप 27 माइनस एक्स हो जाएगा. दोनों का प्रोडक्ट गिवन है, दोनों के प्रोडक्ट को सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा. उसको मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से सॉल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी. यहाँ पे ध्यान रखना है कि इन केस सभी अगर कोई एक्स की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे दो का प्रोडक्ट पॉजिटिव नंबर दिया हुआ कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. लेकिन यहाँ पे दोनों पॉजिटिव आए हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं. कह रहा है कि फाइंड द टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose sum of whose square is 365. तो अगर आप एक को एक सपोज करते हो तो दूसरा कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर x+1 हो जाएगा. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर ऑफ देम इज 365, सो यू कैन राइट x स्क्वायर प्लस x+1 ऑफ होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 365. आफ्टर simplify it, you get the quadratic equation and solve it by middle term split method. You get
x plus 14 and x minus 13 is the factor. So separately, after separately 0, you get the minus 14 and 13. So since integers are positive, so we take the only 13 not 14. अभी मैंने पिछले बार भी बताया कि इस तरह के अगर वर्ड प्रॉब्लम होंगे तो आप उसको समझ लोगे. Question number 15. In question number 5, given that the altitude of right angle triangle is 7 cm less than the base, तो आपको क्या करना होगा, बेस को एक सपोज करना होगा, तो एल्टीट्यूड x माइनस 7 हो जाएगा. हाइपोटेन्यूज इज गिवन 13. You have to find the other side. So just you have to apply the Pythagoras theorem. What is Pythagoras? Square equal to perpendicular square plus base square. आप रख दोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, मिडिल टर्म डिस्ट्रीब्यूट मेथड से सॉल्व करोगे. x की दो वैल्यू आ गई, 12 एंड -5 आप ले नहीं सकते हो, तो आप 12 कंसिडर कर लोगे. अगर एक 12 होगा तो दूसरा 12 माइनस 7 5 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ए कॉटेज इंडस्ट्रीज प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री article in a day. It was observed a particular day the cost of production of each of the article in rupees was 3 more than twice of the number of the article produced on a day. On that day, the total cost of production of the day is rupee 90. Find the number of article produced and cost of each article. So just you have to suppose the number of article is x, then the cost of production is what? 2x plus 3. And the given that total production is 90 rupees, so x into 2x plus 3 is 90. This will be converted into quadratic equation. After solve the middle term substitute method, you get the 2 factor 2x plus 15 and x minus 6. This is equal to 0. Separately 0, you get the x equal to minus 15 by 2 and 6, but you have to take only 6. So article produced is 6 and cost will be 2 into 6 plus 3, that is 15 rupees. This exercise completed. आपको क्या करना है, समझ के इसको एक बार खुद से भी सॉल्व कर लेना है ताकि अच्छा तरह से समझ में आ जाए. थैंक यू. डेट्स ऑल.